लेफ्ट साइड में। सेंटर सेंटर। रकुल जी लेफ्ट साइड। अरे कंट्रोल क्या होता है जैसे रकुल जी जैसे सेंटर लेफ्ट लेफ्ट। हरिओम हरिओम। यहाँ लेफ्ट साइड में। मैम लेफ्ट। Hello, how are you? Very good. How are you? फिल्म फेयर नाइट को ये क्वेश्चन आप मुझे हर फिल्म फेयर पे पूछते हो। ऐसी कोई मेमोरी मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि फिल्म फेयर के बिना आपका चाइल्डहुड हुआ हो, एंड स्पेशली जो लोग फिल्मी होते हैं, एंड आई हैव ग्रोन अप वाचिंग फिल्म फेयर, सो इट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ any event that film fair has, whether it's style awards, whether it's the main awards. Film fair or Bollywood, I think go hand in hand. Thank you. मेरा स्टाइल स्टेटमेंट इज़ ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, एंड मैं वही पहनूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. सो आई थिंक एज लॉन्ग एज आई कैन ओन इट, इट विल लुक नाइस. This is an international designer. If you honestly ask me, मैं नाम भूल गई. So this is but it's an Italian designer, and it's I think just flowy and pretty. The film's been declared a hit, and I'm very happy. See, we knew always that it was for a certain section of audiences, and that section has really lapped up the film. So we're very happy. I think it's almost touching 50 crores, and the film wasn't made in too much of a budget. So we're good. I'm pretty happy. You know, it's really sad ki every time an incident like this happens, we talk for about a few days, a few weeks. There's a lot of rage, there's a lot of anger in the country, and then after a few weeks, we forget it all, and until it happens again. So I think there needs to be a very strong law. There needs to be punishment. हमारे laws तो हैं, but there needs to be stricter punishment. And I honestly feel one severe lesson will create fear in the minds of other people who will not even think of doing something like this. I think that's what we need to do. बहुत ही दुख की बात है that our country has come to such a level where लड़कियों को बाहर जाना has become a debate. क्या कपड़े पहन रहे has become a debate, and why is it that we cannot talk about why men cannot see them respectfully? So I think एक तरीके से हमको पब्लिक पनिशमेंट या एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जिसके बाद किसी का दिल भी ना करे ऐसा सोचने का भी. गुस्सा आता है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.